Hello, friends. Starting with uh, the taxation part, we had a session earlier about taxation of SGB in CFP exam. Now, in continuation to the same, I'm creating one more video, like which is wherein I'm talking about both the curriculums, how CWM taxes considers taxation on it, and how CFP is going to consider it. So one thing that is known to us, और हमें पता भी है कि like 1/4/2023 से टैक्सेशन में थोड़े चेंजेस आए हैं. And of course, financial year 23-24 is considered by no institution as of now in their curriculum. So let us understand how it was used to be taxed. तीन essential products में ले रहा हूँ यहाँ पर. So first is physical gold. Second one is gold ETF. And third is SGB, right? These are very well known products, the products of general awareness and knowledge. Uska taxation हम देखते हैं. So if somebody had purchased any asset before this date, like 1st April 2023, so gold के taxation में पहले और अभी कोई फर्क नहीं है. Like it becomes physical gold, yes, right? So 3 years के बाद it becomes long-term capital asset, and the taxation is 20% with indexation. So that is mostly known to us. And right now, this guideline remains the same. ठीक है, सो दिस इज द यूजुअल, लाइक मेरे काफी सारे टेक्स्ट के वीडियो में भी मैंने यही चीज आपको बताई है. सो फिजिकल गोल्ड, like the holding period or say the classification of long term and short term is based on 36 months. ये एक चीज आप याद रखो. ETF. Now, there is interesting and major change at ETF level. Any unit which has been bought before 1st April 2023, all those units will follow the taxation based on the earlier guidelines. जो physical gold और gold ETF का same था. So long term will be based on 36 months based classification, and taxation will be 20% with indexation. That is known to us. Now, as I said, financial year 23-24 कोई भी एग्जाम के करिकुलम में नहीं है. ओनली CFP में फाइनल लेवल में 23-24 के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बट दैट टू दे आर ऑफ जनरल नॉलेज, नॉट प्रिसाइसली विथ लेटेस्ट चेंजेस. सो ये देखो आप, gold ETF. So what is the change here? So now any unit which has been acquired on or after 1st April 2023 will be considered as short term. There is no long term here and will be taxed as per the slab. So this is an interesting point you should note in exam कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 का क्वेश्चन थियोरिटिकली पूछे तो ये चेंज आपको याद रखना है, राइट? एंड देयर इज वन मोर थिंग वी कंसीडर हियर, दैट इज SGB. इसमें सबसे बड़ा लफड़ा है, राइट? सो अर्लियर टाइम से, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड, कि पहले SGB का टैक्सेशन 3 ईयर बेसिस पे करते थे, 20% इंडेक्सेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस आते थे. देन मैंने जो लास्ट वीडियो पब्लिश किया था उसमें बोर्ड ने ही चेंज किया था, wherein they suggested that it is after 1 year but it is 20% indexation. ये उनके सैंपल पेपर में उन्होंने पब्लिश किया था. Then they finally returned on to the correct one. They finally returned on to the correct one, and SGB is now, आप गूगल पे भी पढ़ोगे बहुत सारे वेबसाइट्स पे, लाइक आपको ICICI HDFC सिक्योरिटीज के साइट पे भी यही पढ़ने मिलेगा, wherein the SGB is to be correctly taxed as government security. और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपके पास टैक्सेशन होता है 10% फ्लैट एंड 20% with indexation, right? So this is the classification or the methodology, and इसका जो classification में बता रहा था, segregation is based on 12 months. So this is the correct way to tax SGB. But I'm still confused कि CWM एग्जाम में इंटरेस्टिंग क्या है कि there is no assessment here defined as such, because वहां पर generalized questions पूछते हैं taxation के, wherein you don't have to remember the specific guidelines of a year. जैसे कि आपको residential status पूछा, तो those guidelines are fairly constant throughout.
फिर आपको नॉर्मल कैपिटल गेन का क्वेश्चन पूछा जिसमें आपको इंडेक्सेशन करना है, रियल एस्टेट का है। तो इस तरह से जनरलाइज्ड क्वेश्चंस उसमें ज्यादा होते हैं, सो विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक असेसमेंट। योर न्यू टैक्स रिजिम तो अभी सीडब्ल्यूएम में भी नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट सीएफपी, तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग अभी राइट नाउ, राइट, जो मेरा पब्लिश हुआ वीडियो, ये डेट को मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग के एग्जाम दे रहा हूँ, सो वेरी आई एम फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर 2021, वेरिन आई एम गिविंग द फाइनल एग्जामिनेशन, तो वहां पर उनका असेसमेंट ईयर 23-24 पूछ लेते। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे है कि जिसमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 वाला भी कंपोनेंट होता है, सो देयर इज लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसी दैट वी कैन आइडेंटिफाई। बट हाँ, एसजीबी का टैक्सेशन अभी हमें यही लेके चलना है। सो बी अलर्ट, अगर आप 2021 वाली एग्जाम दे रहे हो सीएफपी की, देन यू शुड बी अलर्ट कि किस तरह से होगा। सो पहले वो लोग ऐसे भी कंसिडर करते थे 36 मंथ्स बेसिस पे, और 20% भी लिया था उन्होंने। सो आई डोंट नो, बट दिस इज यू हैव टू कंसिडर इन एग्जामिनेशन, राइट। सो ये थोड़ा हम, मेरा जो लास्ट वीडियो था उसके कंटिन्यूएशन में मैंने पब्लिश किया कि फिजिकल गोल्ड का टैक्सेशन, ETF, गोल्ड ETF का टैक्सेशन, एंड SGB, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन। आप CWM कर रहे हो, CFP कर रहे हो, दोनों एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लाइकवाइज देयर आर सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स लाइक विच यू कैन डेफिनेटली डिमांड कि जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, right? So let me know where are you facing the challenges, and we'll definitely try to make more and more videos to help you out clear both the examinations as early as possible. Like, see you in next video. Bye.